हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, गाइस। तो भाई अब हम अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, आर्कोन क्वेस्ट वापस चालू कर रहे हैं। क्योंकि तुमने लाइव देख लिया होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैं शुरुआत कर चुका हूँ नेटलैंड की। 1.5 घंटे का वो वीडियो है, वो लाइव स्ट्रीम थी, बहुत अटकी यार। इसलिए मैं वापस फ़ोन पे आ गया, पर मैं आना तो नहीं चाह रहा था। मेरे को मेरा पीसी वापस ठीक करवाना पड़ेगा। लैपटॉप में यार बस बहुत हैंग कर रहा है, चल तो रहा है पर अटक रहा बहुत, एफपीएस और वो सब बहुत डाउन हो रहा है, क्योंकि ओबीएस चल रहा पीछे, उसकी वजह से। पर कोई बात नहीं गाइस, हम फ़ोन पे वापस आ गए। कंटिन्यू तो हम ज़रूर करेंगे, भले ही तुम मेरे चेहरा ना देख पाओ, पर कोई बात नहीं भाई, हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरे को थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े, एडिटिंग करने पड़े, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, सह लेंगे ये भी। पर हम नेटलैंड पूरा करेंगे भाई। ऐसे जर्नी तो देखेंगे भाई, वीडियो तो बनाएंगे। और ये भी वीडियो कम से कम डेढ़ ढाई घंटे का तो है ही। 1.5 घंटे का मान के चलो, 1 घंटे 25 मिनट ज़्यादा। तो भाई देख लो भाई। और ये हमें ब्राउनी मिला था, मैंने इसका नामकरण कर दिया था। ओहो। हम्म। ताऊ कुछ कह रहे हैं। ह्यूमंस एंड सायरन लिव टुगेदर इन प्रीटी, यू मीन ट्रैवलिंग टू जनरल ब्राउनी। Not exactly travels good with siren and human legs, but bluntness, brownie is quite different. कैसे भाई? Sorry all this talk, and I haven't even introduced myself Melvin, and that siren relax. ठीक है भाई, ये siren को दिखता है, put study team, and of course in the name maybe I have yours too. ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन चल रहा है। पाइमन पाइमन है, मैं अपना ट्रैवलर यू हूँ, और ये अपना ब्राउनी है। एज सच एज लुक्स लाइक ए पाइमन हैव बीन टेकिंग गुड केयर ऑफ। अरे भाई हम अच्छा ख्याल रखते हैं भाई हर चीज़ का। ये भाई हो गया अपना बच्चा डिस्ट्रैक्ट, ब्राउनी हो गया डिस्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स वी हैव फीस्टेड टन्स टुगेदर हैवंट वी ब्राउनी। हाँ भाई, पाइमन तो खाने के ही सोचते तब देखो जब। तो भाई जाओ बेबी सिटिंग करो, पाइमन जाओ। ए ब्राउनी डोंट गो वॉन्डरिंग ऑफ। ठीक है भाई, जा भाई जा। शेम वी हैव रेडियस लिटिल वन। भाई अपने तमीज़ में बोल रहे हैं भाई, पर मैं ये बोल नहीं सकता क्योंकि रूड हो जाएंगे, पहली बार तो आए। माई अपोलॉजीज, इज मस्ट ऑन सूट, बट आई रियली डू थिंक इट्स ऑल राइट। आई हैव राइटेड, यू मस्ट हैव बीन सी लिटिल टर्न बिफोर। ब्राउनी इज डिफरेंट फ्रॉम देम। कैसे भाई? अच्छा हाँ, उसके मार्क है ना सर पे रेड कलर का। हाँ हॉर्न्स पे। क्या बात। दिस इज नॉट टू मार्क, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मार्क दैट siren would bear. Good siren is masked, possesses incredible power such as great strength and a swift swimming speed. भैया मतलब अलग ही है हमारा बंदा। बट आई एम afraid his blessing him Lord, and this power is more than ancient and not its मतलब क्या बात है भाई। मतलब खतरनाक भी एक तरीके से, ये डेंजरस भी है। एंड दिस वाज आल्सो ग्रोइंग समवन किल्ड एंड ओह, पागल भी हो जाते हैं इससे कुछ लोग, कुछ ड्रैगन मतलब। Perhaps I believe it's been children from my course really much appropriate. हम्म। भाई हम क्यों दें भाई तेरे को? Again my apologies for clumsy words, but I believe I have to leave this. Instead I'm giving up. Giving should never be the first resort. I do not amend in my companions. Yeah. Alright, very well, Outlander. ठीक है भाई। भाई ये हमसे अपना ड्रैगन लेना चाह रहा है पर हम देंगे नहीं। The tribes would be took and split two into less volcano and they name their companions. ठीक है भाई। Then they would gain Saharanite kingdom acceptance. People of Bigos's great tribes long north and spared for such attempt. But you are an outlander, a traveler from afar, bond and old-fashioned. So if you succeed, you will prove beyond a doubts incredible some ancient relic. अरे भाई कितना बकवास करता है यार ये। ठीक है भाई, सेव दैट केस है। अरे भाई मैं इसलिए फटाफट स्किप कर रहा हूँ इसे। भैया ठीक है भाई, पर सोचने में रह गए हम।
ए ब्राउनी क्वाइट रनिंग ऑलरेडी। अरे हमारा प्यारा सा है ब्राउनी। And by the way, this guy has gone seen anything weird today? Long story short, हमारा ब्राउनी थोड़ा ऐसा है, मतलब अलग ही है बिल्कुल ही सब में से, क्योंकि हम भी अलग है तो हमारा ब्राउनी भी अलग है, सबसे अलग है। तो उसके जो साइन है सर पे, उसका पता करेंगे हम। पता नहीं कैसे करेंगे, बाद में करेंगे। पहले हम नेटलैंड की क्वेस्ट पूरी कर लेंगे। ये साइड क्वेस्ट लग रही है मेरे को, पर या तो इसी के अंदर आ जाएगी। चलो भाई, ये हो गया अपना माल पानी दागना पीना। चलो भाई, चलो अब हम यहाँ से हम चलते, पहले सामान उठा लूँ, ये सब चीज़ें उठा लूँ, पर उसके बाद हम चलो भाई स्टोरी क्वेस्ट में। ये अंकल ने पता नहीं मेरा फालतू टाइम वेस्ट करी है, पर कोई बात नहीं भाई, इतना चलता है, इतना चलता है भाई। ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें, ये देखो गाइस भाई, ये जो ड्रैगन्स बने हुए हैं ना, हम लोग वो ड्रैगन बन जाते हैं तो भैया मज़ा आ जाता है। पर उनकी स्किल्स भी बहुत प्यारी, बहुत प्यारा वो दिया है ये हमारे को गेंशिन वालों ने, व्यूअर्स ने, कि एक नया ही मतलब दे दिया गेम स्टाइल हमें, बिल्कुल बहुत प्यारा लगता है और मज़ा आ गया भाई। तो स्टोरी क्वेस्ट कंप्लीट चालू हो गई है, मतलब अब हमारी नेटलैंड की। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ बीच में, क्योंकि इनके डायलॉग्स चल रहे हैं, तो भाई एंजॉय करो। Oh, are you all out of candy? I've got some more if you want. I've also got bread, drinks, fried rice, roasted apples. Whoa, you're practically a walking cafeteria! I just like bringing a lot of stuff with me. As my mom always says, it pays to be prepared. They only come in handy every so often. But hey, better late than never, right? Huh? Is everything okay, traveler? Seems like you've got something on your mind. वही अपने क्या हम एलिमेंट यूज नहीं कर पाए, और एलिमेंट तक यूज नहीं कर पाएंगे तब तक पता नहीं क्यों दिक्कत हो गई हमारे साथ कुछ। Actually, you know what? It could be because our Archon is different from the rest. हाँ, ऐसा कैसे? Different how? कैसे? Well, I heard that other nations' Archons live a long time and belong to a class of extremely powerful beings known हाँ, as बाकी सब जगह गॉड्स ही कहते हैं बेसिकली, टिपिकली। And that's not the case in Natland? क्या है भाई, क्या दिक्कत नेटलैंड के साथ दिक्कत Not क्या? at all. Every Pyral Archon in Natland was an ordinary person before taking on the role. गॉड नहीं है वो, मतलब एक ह्यूमन है। Huh? बहुत बढ़िया। A human serving as an Archon? फरीना की Is तरह। that even possible? भाई कुछ तो दिक्कत है find it भाई, hard to देखना believe पड़ेगा, वो तो too, huh? क्वेस्ट में पता चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी So, क्वेस्ट। तो चालू that's हो ही रही है, not मतलब बिल्कुल normal ही then? बिल्डअप हो ही नहीं, चालू हुई है, पता Guess चला I've है। just gotten used to बढ़िया how लगेगा things भाई, are देखते here हैं। in Natland. Well, based on what we've seen, that's not usually how it works. It can't be that easy for a human to become an Archon, right? Pretty sure the Pyro Archon's the only one who can answer that. I do know this, though. Even after becoming the Pyro Archon, the person in the position still grows old and requires rest. The statue of the Seven may look a lot like our current Archon, but that has to be a coincidence. Countless people have held that title over the years. Oh, I should also mention, the pilgrimage is actually how we select the Pyro Archon. Anyone can claim the title, you just have to prove your strength. So the contest is all about how strong you are. That's right. We believe performance in battle is the most comprehensive test for a future Archon. Plus, when someone emerges victorious, it's hard to argue with the results. Our current Archon achieved an overwhelming victory. The result was obvious from the beginning. Don't just take my word for it, though. Even the tribe elders said they've never seen an Archon with such strength before. But it's just as Chief Pakal said. Today's limits are tomorrow's breakthroughs. Our future Archons will go from strength to strength. Okay, Paimon's gonna ignore the whole human becoming an Archon thing for now. It's just, if she's really that strong, do you think that's a good thing or a bad thing for us? If we think back to what happened in Inazuma...
वही तो, हम लड़ने I थोड़ी ना wouldn't आए worry भाई, हम about तो it. पूछने आए, Our ट्रैवल करके Archon's आए a हैं wonderful मतलब। अब person लड़ना तो and है very क्योंकि welcoming नेशन to ऑफ वॉर है तो guests. लड़ेंगे I भाई। think you'll get और along great. वो तो देखना पड़ेगा। Yeah, you're क्या right. होता है, It's not स्टोरी like we're कहाँ जाती है planning भाई। on मेरे को तो causing बहुत trouble मज़ा आ रहा है क्योंकि either. नेटलैंड है सैटरडे में, It'll तो all भाई ये work मज़ा out. आएगा। और ये You'll तो meet her पूरा soon साल खींचेगा enough. क्योंकि एक पूरा रीजन All पूरा right, एक साल Paimon's खींचता है। just about फाउंटेन ready भी पूरा एक to... साल खींचा था। Huh? तो भाई Oh, देखते हैं what's भाई कैसे that? जाता है। Oh, we call this a phlogiston chislet. Good things happen if you infuse it with phlogiston. Sorry to disappoint, but only people from Natland can use that power. ऐसा कैसे? हम स्पेशल बंदे हम जा सकते हैं। और ये भैया ये जो ड्रैगन है ना, ये यम्पस हो क्या बोलते हैं ऐसे, पता नहीं मेरे को भैया। यम्पर, मैं तो यम्पर बोलूँगा भैया क्योंकि हम पोकेमॉन फ़ैन हैं, हम यम्पर बोलेंगे ऐसे हैं। तो भैया अब ये देखते हैं हम कैसे करते हैं ऐसे कि ये फ्लेम्स चाहिए होती है। ये जो ये हमारे एक और बार है ना ऊपर इसके, भैया पहले हम अलग हो जाए। इसके ऊपर एक और ऑरेंज कलर का बार जो है हमारी हेल्थ बार के ऊपर, वो है ऐसे भी। ये सब इन्फ्यूज़ करते हैं भाई इसे। अब देखते हैं कैसा जाता है। ओह इसका चेहरा देखो wait, यार, wait. इतना क्यूट सा You चेहरा है। can वो use it घूम गई, too? पूरा कंफ्यूज हो गई। How? That was amazing! I don't even know what to say! अरे आज तो कोई बड़ा ही आइटम रहा है भाई। अरे डायनासोर, ड्रैगन के एरिया में डायनासोर। Wait, look behind you. कोई तो बड़ा Something's चीज आ coming. रही, बड़े आइटम आ गया भाई। देखा भाई। What do we बस do? अरे Is something after us? Should we get डायनासोर ready बड़े to प्यारे fight? हैं वैसे। बड़े से है ना, क्या बोलते हैं उन्हें, बड़े We're डायनासोर fine, पता we're ही नहीं भैया। fine. This here is Toto. Hi, Toto. Toto. Okay, Toto. It's me, Kachina. बड़ा प्यारा नाम नहीं है, टोटो। ओहो Well, aren't we looking lively today? Did the chisel lure you over here? Warm, isn't it? Oh, so it was just a friendly saurian. That's right. There's quite a few of them around here, and Toto's the friendliest and gentlest of the bunch. He's always hanging around these parts. I swear he does it just to show off to any Outlanders that might come this way. Don't let his size fool you, though. He's just a big softie. What does the crouching mean? That's an invitation. He's offering us a ride. चलो भाई टोटो पे घूमने I'm चले, not so sure टोटो about पे। this. It's चलो kind भाई of मैं तो बहुत scary, एक्साइटेड don't you भाई। think? नेटलैंड It's इतना, huge. मेरे को ऐसा लगता था सबको कि भैया good नेटलैंड थोड़ा point. You guys भारी have fun with भारी that होगा, then. मतलब We'll just float ड्रैगन alongside. उड़ेंगे उड़ेंगे। पर कोई बात नहीं भाई, क्यूट बनाया बहुत, नेटलैंड को बहुत क्यूट बनाया इन लोगों ने यार। Wow, the sightseeing is even better from up here. The higher the vantage point, the better the view. Are you and Toto close, Kachina? Yep. When I was little, my parents and I went to the Stadium of the Sacred Flame to buy a bunch of different fruits, but the cart we were using to transport them flipped over on our way back. Toto wasn't even half his current size back then, but I still burst into tears when I saw him approach. I was afraid he was going to eat all the berries and sunsettias and leave none left for me. In the end, though, he didn't eat a single one, and even chased off a few other saurians looking to snatch a few for themselves. After that, he used his big head to help get our cart right side up again. I've been bringing him fruit ever since. Oh, and I was the one that named him Toto, actually. With the sheer amount of food he can eat, he pretty much grew like a weed. Before I knew it, he was already this big. तो भाई अरे ग्लिच हो रहा Look भाई, over there. ग्लिच हो रहा That's भाई। our destination. कोई बात नहीं भाई, फोन पे भी ग्लिच Stadium होगा of तो the ऐसे कैसे Sacred चलेगा यार। Flame. कोई बात नहीं गाइस, हल्का सा You can चलता let है us तो off here, Toto. पीछे की तरह लैग Thanks थोड़ी for ना the हो रहा भाई। lift. इतना चलेगा भाई, इतना मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। It's an easy walk from here, so I say we head the rest of the way on foot.
It'd be quite the trek for Toto otherwise. That's true, especially considering his size. Well, see you later, Toto! भाई मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, पर तुम नज़ारा देखो भाई, नज़ारा देखो भाई, मस्त एकदम। और भाई हम कहीं पे भी इसको चला सकते हैं भाई, अपनी ड्रिल को कहीं पे भी, रास्ते पे कहीं पे भी सर्फिंग कर सकते हैं भाई। नेटलाइन तो नेटलाइन ही बना रखा है, पता नहीं कैसे बना है। गेम ऑफ द ईयर मिला भाई गेंशिन इम्पैक्ट को भाई। और ये जस्ट गेम नहीं है भाई, बाय द वे मेरे लिए तो गेम नहीं है, इट्स जस्ट लाइक एन इमोशन, जस्ट इमोशन है भाई, गेम नहीं है, इमोशन है भाई। क्या बोलूँ अब मैं, मज़ा आ गया भाई। और तुम देखो भाई कितना, मतलब कितना अच्छा बना रखा है यार। टन 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 भाई, मज़ा आ गया भाई, मेरे लिए तो भाई इमोशन है। और इसी वजह से मतलब 2 साल से गेम ऑफ द ईयर फॉर मोबाइल है भाई। क्या बात करे भाई, क्या बात करे, मज़ा आ गया भाई। और इसी के चक्कर में हमें 1000 प्रीमोजेम्स फ्री मिले हैं भाई, मज़ा आ गया। वो ऐसे ही सपोर्ट करो भाई गेंशिन को भाई। इंडिया में हमें ज़रूरत है ऐसे गेम्स की, गाचा गेम्स की हमें ज़रूरत है भाई। वेदरिंग वेव्स है, ये है भाई, बहुत सही। और अभी तो एक और नया गेम आ रहा है। supposed to meet some friends here, but I don't see them anywhere. भाई Maybe मज़ा आ they're गया not भाई, here yet. मज़ा आ गया। नेटलैंड ओहो, हमारा दूसरा कैरेक्टर का, हमारा साइरन आउजा। और आ जाओ, हाँ वो हमारा चेहरा देखो। किनीच को हम लेंगे भाई, अगले में लेंगे, किनीच को लेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं, मैंने मुलानी ले ली है अपने दूसरी आईडी में, है ना। वो भाई देख लो ना, मैं तुम्हें वीडियो बना के दे दूंगा, वीडियो बना देंगे और शॉर्ट भी बना दूंगा। और मेरे को पहले ट्राई में मिला भाई, फर्स्ट 10 पुल्स में मिला था मेरे को मुलानी। Just because Kachina's too nice to get mad at you doesn't भाई give you हमारा an बॉय, excuse to be rude to her. बॉय भाई सब आंखें देखो इसकी यार। And what are you gonna do about it? You think you're the boss of... Hey! Oh, what do you think you're doing? All right, I've put him in a timeout for now. Sorry about that. Aw, you didn't have to do that. Hal just doesn't have much of a filter, that's all. I don't mind. He got what he deserved. वो Let's just hope the भाई lesson sticks this time. मुलानी आ गई भाई, मुलानी आ गई भाई, मेरे अकाउंट में भी आ गई है ये। पर भाई मज़ा आ गया भाई, तीनों नेटलैंड कैरेक्टर मिल गए और हमें भी मिल गए, क्योंकि हम भी खेलेंगे नेटलैंड में भाई इनके साथ। मैं किनीच को लेऊंगा भाई इस आईडी में ज़रूर से। इंट्रोडक्शंस फर्स्ट। A traveler, you say? You came at the perfect time. The pilgrimage is a sight to behold this time of year. I don't see your teammates with you, Kachina. Where are they? Oh, they went to join teams with a better chance at winning. So you're saying you've been ditched? Again. That might give them an advantage during the team stage, but it all comes down to individual strength sooner or later. Yeah, well, I couldn't even promise them we would make it through the team stage. The outcome of the team stage usually depends on the ancient name bearer, after all. Hey now. There's not a single person here that can promise their team victory. You're putting too much pressure on yourself. Besides, you're not lacking in strength at all. You just need a bit more confidence. You were only 3 victories short of reaching the Night Warden Wars last time. Wait, so if the pilgrimage is like a national sporting competition, then what are the Night Warden Wars? The former is a battle of skill. The latter is a real war. A war against our eternal enemy, the Abyss. अबिस यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई देखा था टीजर में, क्योंकि अबिस तो हर जगह है भाई, मेन तो एनिमी वही है पड़ा। That's not too far off. That's why it's called the Night Warden Wars.
The pilgrimage chooses the strongest warriors among the tribes, and those warriors fight to repel the abyss in defense of our homeland. Their names and deeds are then recorded in epic tales passed down over time. That is the highest honor you can achieve in Natlan. Yes, but that's the nature of war. Danger comes with the territory. Resisting the abyss is our duty. But we're not alone in this fight. We also have the blessing of our Archon, which allows for our safe return. It's something we call the Ode of Resurrection, which does exactly what it sounds like, basically. Resurrect people, you mean? क्या बात है, resurrect कर सकते हैं, हम So मर it's गए not तो so वापस जिंदा हो scary, जाएंगे, really. बहुत बढ़िया। Our Archon's blessing gives us the courage to keep moving forward. Let's go register. We don't have much time. Wait, what about you, Kachina? You're not really planning on competing solo, are you? We really wish we could help, but we're not from here, so it doesn't seem like we can take part. There's no threshold to the number of participants. With the sheer number of teams, it's practically guaranteed chaos. No matter how strong or experienced the warrior, victory is never assured. In a situation like that, it's always better to have someone to watch your back. Oh, how about this? When we register, why don't we ask if these two can have special permission to participate? Odds are the answer will be no, so if that doesn't work, well... I only have a few teammates this time. If someone else could take them, then... You're not asking me to lead your team, are you? Look at you, mind reader. So, what do you say? With how strong you are, it would practically be an upgrade for my teammates. Fine by me, but doesn't that leave you and Kachina as a team of two? There's a world of difference between that and flying solo. Besides, we're a formidable duo. I bet our new friends here will agree that two's always better than one, right? Oh, you mean us? हाँ, वैसे भी अब तो पाइमोन की आदत हो गई है, अब उसके बिना तो कहीं जा ही नहीं सकते भाई। वही हमारी ट्रैवल गाइड है भाई। You're right. Two is definitely better than one. It's just like the old saying we have here in Natlan. No one fights alone. But what if I drag you down? Listen to yourself. You'd be hard-pressed to find someone in Natlan who can beat us when we're together. Hearing you say that does make me feel a little more confident. Still, teams rarely contain more than one ancient name bearer. People are definitely gonna think of us as cowards. The rules don't forbid it, so who cares what they think? It's not like they left us any other option. Well, I'll leave you to break the news to your soon-to-be former teammates. I'm not good at stuff like that. Oh, I know. They deserve to hear it from me anyway. Just give me a second, you guys. We can go sign up together once I'm done. तो गाइस, ये हमारा यहाँ पे नेटलैंड का पूरा एरिया, यहाँ पे स्टेडियम का पूरा एरिया, और हमारी फाइट्स अभी अरीना में अब चालू होने वाली पीछे। तो भाई देखेंगे भाई, और चलते हैं भाई। अब वैसे भी वहाँ यहाँ रुक के भी क्या करेंगे, रजिस्टर करते हैं। This is the place. Let's wait for Mualani here. Did you see the flags at the front gate when we entered? Oh, yeah. There were flags, weren't there? Those are our tribal flags. One for each of the 6 tribes that make up Natlan, including the Children of Echoes. Why the sudden tour guide routine? I said I'd introduce them to Natlan, and we've got nothing better to do, so I might as well deliver on the promise. Fair enough. Well, I'm from the Scions of the Canopy. We live high in the mountains and have the closest ties to the Yumkasaurs. My friend Mualani belongs to the people of the Springs, a seaside tribe. The scenery over there is beautiful, and you can find some really tasty fish. That just leaves the Flower Feather Clan, the Masters of the Nightwind, and the Collective of Plenty. If we get a chance after the pilgrimage, I'll be sure to show you around. Well, if we're talking tribes, allow me to stand in for our chief and welcome you on behalf of the people of the Springs.
Mualani, you're back! We were just talking about you. Everything's settled on my end. My teammates took it unbelievably well, actually. Your reputation is really something else, Kanich. They probably just didn't see any drawbacks to your proposition. We're saying the same thing here. You, my friend, are a formidable competitor, and they recognize that. Anyway, thanks for waiting, you guys. Let's go register. Hello there. Here to register for the pilgrimage? That's right. I wanted to ask, though. These two travelers are very interested in the competition. Any chance they could take part? I'm sorry, but only people from Natlan are eligible to participate. You couldn't make an exception just this once? This traveler is a renowned adventurer. She's more than skilled enough to participate, and I'm sure the audience would be interested in seeing what she can do. It's not that simple, Miss Mualani. Even a single exception sets a dangerous precedent for countless interested parties in the future. The purpose of the pilgrimage is not only to select strong warriors, but also to collect contending fire from the battles. This is the fire that fuels the sacred flame. Natlan is only safe from the invasion of the Abyss, while the sacred flame burns eternal. Oh, so there's another purpose for the tournament. That was the initial purpose, actually. Every participant, whether they win or lose, contributes to the defense of our nation. That's what makes it such an honor to take part. Exactly right, Mr. Kanich. Contending fire can only be produced in battles between people of Natlan. Outlander participation would inhibit the production of this fire, which could in turn jeopardize the sacred flame. Oh, so it all comes down to the contending fire. Well, you can still enjoy the event from the stands. I'll try to get you some good seats. That would be great! Tourists like us are better suited to being spectators anyway. Still, there's something Paimon was wondering, actually. You read Paimon's mind, Traveler. Why doesn't everyone just fight together? You know, since you can bring them back to life. The power of resurrection has its limits. For starters, the Ode only works on those who bear an ancient name. That's also why ordinary people who emerge victorious in the pilgrimage aren't sent to fight the Abyss. It's for their own protection. Although, they're still afforded the same honor as those who triumph over the Abyss in battle. That brings us to the other condition for resurrection. Not much to this one, actually. Just one word: victory. Victory? The victors shall burn bright, while the losers must turn to ash. Only those who triumph over the Abyss earn the right to be revived. Defeat in battle not only means death, but also the destruction of your ancient name, preventing it from ever being inherited again. The tales of the vanquished are eventually forgotten, and an ancient name cannot survive when the stories of its bearers are lost to time. Yeah, they won, right? Isn't it the defeated ones who need reviving? You have to think about it at the team level. For example, 5 representatives will be sent to repel the Abyss this time. Even if 4 of them were to perish, the Ode of Resurrection would still take effect. All you need is for one person to return victorious. Because every victory is a building block of our legacy. Of course, the team needs to be strong enough for that to be the case. Otherwise, the price of failure is still very high. That's why the first stage of the pilgrimage is divided into teams, to instill in us the importance of working together. No one fights alone. That is what we believe. A lone warrior is one whose defeat is final. This all sounds pretty dangerous. Well, that axiom is meant to be a warning as much as a source of inspiration. Danger is always present, but together, we can move forward, united in the knowledge that behind every hero charging into battle lies the support of all of Natlan as well as our Archon. Not to mention, the Abyss isn't an enemy with a concrete form. We're often just dealing with the fallout of its scheming. I've actually fallen in battle before. I spent some time wandering the realm of the Wayab. It was unlike anything I'd ever experienced before. The realm of the Wayab?
Does that mean the Wyab exists somewhere in Natland? Hard to say. The realm's not somewhere you can access by ordinary means, and very few people are capable of establishing a mental connection with the Wyab. We call this realm the Night Kingdom, a mysterious liminal space between the body and mind, life and death. The fact that you were resurrected at all is the worst thing in the world. Then releasing you from your timeout has gotta come in at a close second. You would do well to speak with reverence of the almighty Dragon Lord Kahula-How! Lest you live to regret it. If you're done arguing, your registration is now complete. It all went fairly quickly, considering we all know each other. Now, I just need to register your team members according to their name cards, and you'll be all set. In the meantime, you can all go rest at the hotel. As usual, dinner and lodging for tonight are free. Nice. Oh yeah, I forgot to mention. All food and entertainment before tomorrow's matches are on the house, courtesy of our Archon. Family and friends included, which means you both get in on it. Come on, let's go have some fun! तो अभी तक बेसिकली बात हुई नेटलैंड में ये है कि मतलब तुम सब लड़े हुए हैं जाके वहाँ पे, और फिर उसके बाद अगर 5 की टीम है तो 5 में से 4 मर जाते हैं तो एक वापस आना पड़ता है, ये जिंदा हो जाए, फिर रेजरेक्शन ये होता है फिर। These dishes are all local specialties. There's more where this came from too, so don't be shy. Let's feast until the bill gives the Archon a heart attack. Don't be dramatic. The Pyro Archon is very generous, even if it does cause some trouble for all the hotel workers and volunteers. Speaking of trouble, I've locked a How away for now, so you don't have to worry about him being a nuisance. Wait, isn't that a little harsh? Nah, Kinich and How are always like that. Everyone has their own unique way of getting along with their Saurian companion. Hmm. What's got you all down in the dumps, Kachina? You don't have to worry about tomorrow. I'll be with you every step of the way. I know. Everything's fine, really. I'm just nervous. I can't keep using my age as an excuse. I have to get stronger. I have to prove to people that I'm not trying to avoid the Night Warden Wars. You don't have to prove anything to anyone. You know your own heart. So stop beating yourself up over other people's opinions. If they don't think you deserve to bear your ancient name, they can take it up with the Wyab. Trust me, Kachina. The Wyab see something special in you. I just hope it's not the fact that I can take a few punches. Yeah, I'm on a 7 or 8 pilgrimage losing streak. My ranking has been improving little by little, but still no wins. To be honest, losing 7 or 8 times isn't even a lot. Maybe other people can't see your improvement, but your performance still isn't something to scoff at. Yeah, didn't you say you got really close before? It's just, what if I don't even make it through the team stage this time? Hey, have a little faith, will you? You've got me on your team. Stumble, and I'll be there to get you back on your feet. Run into someone you can't beat, and we'll face them together. I know you've never tasted victory, but you trust me, don't you? Mililani, ओह ये रोक काय को रही है you're यार, the best. पैरी है यार, अरे भाई डिप्रेस्ड है बंदी, छोरी डिप्रेस्ड है हमारी भाई, रोते नहीं I है, trust you. हम लोग I हैं ना, definitely do. जीतोगे तुम। And you're right. I've got to pull myself together. I still don't know why the Wyab chose me to inherit an ancient name. But I can't be the only bear who's ever felt this way. If they can keep at it, so can I. Not to mention, the fact that your ancient name has survived until now means all your forebears managed to honor its meaning. Otherwise, it would be lost to us by now, shattered by defeat in battle. That's right! And you'll have us rooting for you too! No. It should be the other way around. I was clearly the one who asked to learn from you. But still. Thanks, you guys. Geez, now I'm crying again.
Everyone has been so nice to me today. I'll win this time for sure. I won't let your support go to waste. Oh, right. I should eat something. My mom said I need to keep up my strength for tomorrow. Nice to see your game face back, Kachina. Thanks for encouraging her, you two. It's easy for people to only see how she has a lot to learn, so it isn't often that she meets people willing to treat her with patience. Don't you worry. We've seen how kind and hardworking she is. We can already tell she's a wonderful person. अरे यार ये रोते नहीं है यार, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता है यार। क्या Take बोलूं it मैं? easy. हम्म, You're getting tears in सही your बात है, रोते नहीं, खाने पे ध्यान दो। I'll pour you all लेके आओ, some ड्रिंक लेके आओ, drinks. जाओ I brought some खाओ, homemade एंजॉय fruit करो juice. यार। Let me just go grab मोटिवेटेड some रहो, cups. डिमोटिवेट कर रहे हो यार। She even travels with homemade juice? Kachina's backpack is practically a bottomless pit. It's got everything. That's true, but she definitely only offered us some so she could go find somewhere to cry for a little while. Seems like you two really look out for her. She's like a little sister to me, you know? She's already so talented. She just needs that one decisive win to convince her of it. And I have a feeling this is the one. This could be the win that finally gives her that confidence. Why are you so sure? Is that what happened to you? Oh, no. I was just born confident. Mulani's being modest. She's already a 3-time veteran of the Night Warden Wars. Came out on top each time. And she's never had to be resurrected. Wow, that's amazing! Nah, it's no big deal. The opponents I had to face were pretty tame, that's all. Ooh, no wait, that makes it sound too unimpressive. Either way, the challenges haven't been that difficult so far. But I'd love to fight alongside Kachina and experience the glory of victory together. The flowers, the applause. Paimon gets it! That's how Paimon and the Traveler are too. Hey, a little more confidence, please? Paimon's always there to cheer you on. Drinks are here. Better try them while they're still fresh. Feeling better now, Kachina? Me? I'm totally fine. Really, I promise. That was just nerves earlier. I'm gonna get some meat in my system, then head out to get some exercise. Want to be nice and loose for the tournament tomorrow. I'll come with you. Just don't go overboard, okay? The last thing we need is for someone to oversleep. We've got an early day tomorrow. If only we had a friend who never oversleeps. Alright, fine. Make sure you guys are up on time. Attaboy! I knew you'd catch on. So full. तो गाइस ये हो गया हमारा यहाँ से सब कुछ प्लान। अब हम चलता भाई। मैंने क्या पूरा मतलब टाइम लैप्स मतलब पूरा एक दिन स्किप करा और वो साथ में जो भी है टाइम को आगे बढ़ा। Morning, Traveler. Morning, पहुंच Paimon. गए भाई। अब हमारी Looks like फाइटिंग चालू everyone's होगी। here right on time. Good to see that no one overslept. Says the one who only made it because I was there to get you! How? Not so loud. You're gonna give me a headache. Well, if you don't do well today, we know who to blame now, don't we? See how your friends talk to me, Kanich? I help you wake them up, make sure everyone's on time, and do I get a thank you, how? No! I get told ये off! बेचारा बहुत दुखी है रे, क्या करे। Mulan प्यारा is है। right, though. अरे मुंह दे, अरे भाई पिक्सल बहुत प्यारा है भाई। गेंशिन ने बहुत प्यारा कैरेक्टर रहा है ऐसे। All right, moving on. How did you sleep last night, Kachina? I had some nerves at first, but my bed was great. I fell asleep the minute my head hit the pillow. That's good to hear. Maybe you handle stress better than you know. The competition's about to start. Did everyone eat something? A little. Didn't want to overdo it. Oh no, we were so
so busy focusing on the tournament, we forgot to buy something. I thought that might happen. Here, I brought you some. No thanks necessary. I'll treat you to something even better once... Attention everyone! The tournament is about to begin. All contestants proceed to the venue. I repeat, all contestants proceed to the venue. Well, I'd say more, but that's our cue. The opening ceremony is what kicks everything off. You should be able to see Kachina and me from the stands. We're counting on you to cheer us on. Don't you worry. Paimon's gonna cheer so loud, you'll hear it across the stadium. Thanks, you two. I'll be sure to keep an ear out. Well, we should get going. See you later. Okay, bye-bye. तो गाइस अभी तक अगर तुम देख रहे हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और भाई शायद मैं उनकी तरफ से खेल पाऊँ भाई, कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। और फाइनली मैच चालू हो चुके, फाइट्स चालू हो चुकी है भाई। हमारा भी टाइम आ गया, हम भी वहाँ पे स्पेक्टेटर्स बन के देखेंगे। और अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और एम रखते हैं भैया 65 लाइक्स का लिए, सिर्फ 65। प्लीज इतना तो कर ही दो यार। चलो भाई यहाँ पे चलें, इससे बात करें भाई, क्या सीन है भाई, दिखा दे भाई, बता दे भाई, हमें रास्ता बता दे। Of the Sacred Flame, you won't be able to leave the arena once the tournament begins. तो बेसिकली हमारा यहाँ पे स्टोरी लाइन क्वेस्ट सब लॉक हो चुका है। अब हम कहीं वापस बैक नहीं जा सकते, हमें पूरा देखना ही पड़ेगा। मतलब पूरा जब तक ये स्टोरी नहीं हो जाती, ये पार्ट पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम देखेंगे, खेलेंगे, ठीक है भाई। तभी मैंने कहा था ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है तो देख लेना, ज़रूर बता देना मेरे को, और कमेंट करके ज़रूर बताओ, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को गाइस, करवा दो 500 सब्सक्राइबर्स प्लीज़ गाइस, प्लीज़ हेल्प मी हेल्प मी गाइस, हेल्प मी। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। Matland, here we go. Yes, start हो गया भाई। The Flame is a competition with a long, storied history. Countless hopefuls have gathered here today, each vying for the same prize: the right to serve their homeland in the Night Warden Wars. Before we begin, allow me to remind everyone of the rules. Today's tournament begins with the team stage, before advancing into individual competition. Each team will board a hot air balloon, which will land at a random location. Contestants must search for fire towers within the contest grounds, accumulate contending fire through combat, and bring a sufficient amount back to the stadium. Defeat in combat, departure from the contest grounds, and running out of time all lead to elimination. Only the strongest teams will be able to withstand the onslaught of battle and return to the arena, blazing fire in hand. Only those who emerge triumphant in the team stage earn the right to take part in the individual battles. The outcome of these one-on-one matches not only affects the contestants' individual scores, but also determines their next opponent. After many rounds of battle, the contestants with the top 5 rankings will get the chance to take part in the Night Warden Wars. Now, let us welcome our Archon as she delivers the opening address. और गाइस इसी के साथ हमारी आर्कॉन भाई मविका भाई साहब, ओ हो फायर भाई साहब, ये कैरेक्टर मैं लूँगा, जरूर लूँगा यार, इस आईडी में जरूर लूँगा यार। बचा रखे मैंने प्रीमोजेम्स के लिए भाई, पता है तुम्हें 30,000 प्रीमोजेम्स बचा रखे मैंने इसके लिए। Fortune, form, many factors influence strength, but victory never lies. The pilgrimage is not merely a trial to determine the strongest among us, but also a stage upon which to showcase your individual growth. Today marks the beginning of yet another legendary saga.
one written in the triumphs of the victors. So, without further ado, let the games begin! So that's the Pyro Archon? Is it just Paimon, or does she seem kind of intimidating? Kachina said she was friendly and welcoming, but, how did she come to that conclusion? भाई इससे बात कर सकते हैं हम बाद में, इतनी भी Yeah, but it खतरनाक would be लग रही है भाई, kind of कूल rude to लग रही है, bother her कूल during एकदम the फायर। pilgrimage, don't you think? We should wait for a better time. Oh, look! It's Kachina and the others! Well, folks, it's clear the contestants are already raring to go. The teams will now board their hot air balloons and make their way to the competition grounds. ये कैरेक्टर भी भाई देखी थी मैंने यार, ये ले सकते हैं पर नहीं भाई, मैं स्किप करूँगा, स्किप करना चाहूँगा। अगर कूल लगेगी बाय द वे फ्यूचर में मैं मन करेगा तो मैं ले लूँगा। और ये हमारी चीना हाईवे का मुलानी और ये हमारी यहाँ पे ये रही भाई। एक और कैरेक्टर 5 स्टार है 4 स्टार है पता नहीं मेरे को, पर जो भी है ठीक है भाई। ये इंसान है ना, उसका नाम है भाई क्या लग रही है मूवी का भाई यहाँ पे भाई, बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक। और स्टार्ट हो चुका है गाइस, स्टार्ट हो चुका है हमारा फेस्टिवल, हमारा पूरा टूर्नामेंट चालू हो चुका है। टूर्नामेंट आज चालू हो गई गेंशिन की गाइस, और भाई देखते हैं भाई क्या जाता है, मज़ा आएगा भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। और भाई स्टार्ट कर चुके हम। Guess this is where we're starting. Let me see. It seems pretty quiet around here. Looks like we get to ease ourselves into combat today. Let's head that way. We don't need to worry about avoiding other teams. Anyone that crosses our path can kiss their chances goodbye. Okay, I'll follow your lead. Just remember, don't hesitate. The team matches are all about keeping the energy up. So let's... And with that, the pilgrimage is now underway. Time for the contestants to give it their तो all. गाइस भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई हम चले भाई। तो भाई पहली हमें अपनी फायर ब्रिगेड मिली, अपने वर्ली टवर्ली। चलो भाई, ओहो आ जाओ लड़ाई करो। कौन लड़ रहा भाई बता दो मेरे को पहले ही, आ जाओ लड़ाएंगे भाई। ओहो 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 ये मेरे को मुलानी का अभी तक समझ नहीं आया भाई, पर मैं को कोशिश करूँगा समझने की जल्दी। पर मेरे को ये ज़रूर समझ में आया ये ओ भाई अच्छा भाई, अच्छी कीप अप चल रही, बढ़िया चल रहा भाई। जल्दी ही हम कर लेंगे भाई। ये ओहो डैमेज बुलानी पता नहीं कैसे किया मैंने। हाँ मेरे को अभी पहले इसको स्किल्स देखनी पड़ेगी भैया, कैरेक्टर ट्रायल करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट कूद गया कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस। अगर तुम लोग भी एक्साइटेड हो, अभी तक अच्छा लग रहा है तो मेरे को ज़रूर बताना। यहाँ तक देख रहे हो तो उसके लिए थैंक यू, और ऐसे सब्सक्राइब भी कर दो यार अगर यहाँ तक देख भी रहे हो तो प्लीज़। तो भाई स्टार्ट करते हैं। ये टेक पहला वाला ले लिया, अब बाकी के और ढूंढते हैं कहाँ है भैया ये लोग। इसी के साथ पहला राउंड कंप्लीट हुआ, पहली वेव खत्म हुई। अब हमें दूसरे में जाना है। हाँ भाई एक और छूटा, हमें ऊपर चलना है भाई। चलो भाई ऊपर चलें, और पीछे कमेंट्री भी चल रही है गाइस, बहुत बढ़िया। यहीं से चलते हैं, यहीं से ऊपर चढ़ जाएंगे। चढ़ो ये बात। चलो भाई कौन लड़ रहा उधर देखे चलो। ओहो हिलिट्रोल्स कहाँ से आए ये बड़े आदमी ले मरो। चलो भाई चलो भैया मज़ा आ रहा भाई। नेट लेन मज़ा आ रहा है। मेरे को एक बार ये मुलानी का सामने आ गया ना, ये इसका बेस्ट अटैक। चलो भाई हो गया, यहाँ पे पेल पाल दिया सबको, आगे बढ़ते हैं। चलो
क्या लेना था मेरे को? ये लेना था। हाँ चलो, फायर लेनी थी। अब और एक और कहाँ है? ऊपर चल के देखते हैं। चलो भाई। अच्छा, एक ऊपर और है, वहाँ भी है। अब वहाँ पे मैं फटाफट जाऊँगा, देखते हैं। यहाँ पे देख लूँ मैं पहले। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत ऊपर चढ़ाना है। मैं फटाफट मैं ऊपर ही इसको कवर करता हूँ। This mountain's huge. Is the next tower really all the way up there? It's going to take forever to make it to the top. Just leave it to me. I'll get us up there. Look out, Riley! We made it! Great work, Kachina! Glad I could help. An empty fire tower. We're too late. Darn it! भाई अब लड़ाई चालू होती है इनके साथ। और यहाँ पे भी है भाई साहब, फाइट करने में तो मज़ा है। मैंने कहा था तुम्हें कि हम इन्हें वापस आ रहे। मैं बैरियर कहाँ रखा हुआ है, मैं जा सकता हूँ। हाँ कोने कोने में है ना, गिरे ना, उससे टाइम बच सकता है। तो लड़ना क्यों इनसे? चलो सीधे डायरेक्ट वहीं पे। टाइम बचाओ भाई, तुम्हारा भी मेरा भी। चलो भाई। ओहो, आ जाओ भाई, लड़ लो लड़ लो लड़ लो लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लड़ लो। ये लो ये लो ये लो ये लो भाई साहब, पीट दिया। ये शार्क अटैक। और ये भाई साहब, इन दोनों का मतलब टीम अच्छी लग रही है वैसे। ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ मैं, इनको बना सकता हूँ मैं, बिल्ड तो कर ही सकता हूँ। इजी है, इनकी टीम अच्छी है, इनकी टीम ड्यू अच्छा है, इनका ड्यू अच्छा बन जाएगा। एक स्पीड में, एक अटैक में, और एक दोनों अटैक और स्पीड बहुत अच्छे है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तुम लड़ते रहो, हम तब तक यहाँ से लेके चल देते हैं। इसका लड़ना ही पड़ेगा क्या इनके साथ? अरे यार, लो फिर, ले ले ले, अटैक करो अटैक करो। ये लो ये लो, और ले ले ले, तू भी ले ले, ये ले भाई साहब। मेरे को अभी तो मुलानी का ये सेट समझ में आ जाए ना, मतलब गेम प्ले स्टाइल, तब जाके होगा। कि मैं तो कैरेक्टर ट्रायल तो किया ही नहीं, मैंने फटाफट आ गया मैं ऐसे खेलने के लिए, तो उसके साथ दिक्कत हो गई। पर कोई बात नहीं गाइस, इतना तो चलता है। कलेक्ट हो गया, तीनों हो गई। चलो भाई अब फटाफट वहाँ निकलते हैं सर्फिंग करके। चलो भाई, लेट हो जाए। ओहो, ये तो वो टीजर में दिखाया था ना अपने को। हाँ भैया, अब आएंगे मज़े, अब होगी हवा में सर्फिंग। बस ये 2 मिनट का, जल्दी जल्दी थोड़ा। ये लो भाई, ओ भाई साहब, हाई स्पीड लाइटनिंग है ना वो। मज़ा आया भाई, अब तो मज़ा आ रहा है। ये बात भाई, कितना कूल है ये चीज़ यार, कितनी कूल है यार ये सब। Hey, what are you thanking me for? We won as a team. There's no way I could have taken on that many people without you. Have a little faith in yourself. You're already a great warrior. Oh, those were some steep curves. You're not scared, are you? I'm fine. I don't scare easily. Not after that last ride you took me on. Oh, yeah. Back when we first met, right? I accidentally knocked over your piece of cake, then offered to take you Spiritway surfing to make up for it. Actually, I was feeling pretty down that day. My training didn't go well, and... Anyway, you really cheered me up. Mualani, I really want to win this time. I want to win this pilgrimage and become a true warrior. That's what I like to hear. If your team has gathered enough fire, please proceed to the stadium at...
गाइस सर्फिंग करने में बड़ा मज़ा आया भाई। तो क्या भाई, मज़ा आ गया बिल्कुल ही यार। ये गेंशिन ने बहुत सारे नए फीचर्स डाले ना, गेम स्टाइल, गेम प्ले, वही सब मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ओहो, सब चीयर कर रहे हैं भाई, अब सब चीयर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। Congratulations! Keep it up, Mulan! Kachina! Mulan! Kachina! Mulan! Kachina! Mulan! You two can take a short break while the team stage comes to a close. We'll draw names to determine the individual matchups in a moment. After that, we'll proceed to the next stage of the competition. I wish you both the best. You two are assigned to different lounge areas. If you'll follow me, please, Kachina. Solo battle's next. And I was 3 wins short last time. I've got to do better. Just calm down, Kachina. You're in good form. You can do this. Hold it right there. This is the contestants' lounge. Unauthorized access is prohibited. We're contestants too. Let us through. According to my list, you're not among the individual match contenders, nor are you related to any of the remaining candidates. Well, we'd still be candidates if it was just based on strength. We only lost because 2 other contestants snuck up on us like cowards. If you could just go contact the referee, we'll wait right here for you to... Wait, you two are... Well, look who we have here. Remember ये us? देखो आ गए बच्चों को मारपीट करने। भैया ये बच्चों को बुली करने की जरूरत नहीं है, सुन रहा है? बच्चों को बुली करने आ गया साला। Right now? Don't mind him, Kachina. Tournament rules place you under no obligation to honor that request. A loss is a loss, and that's final. You! Don't just stand there! Get security over here now! Forget the rules. Isn't the pilgrimage about picking the strongest warriors? She just happened to catch us off guard. It was all luck. Exactly. Now's our chance to duke it out fair and square. ओ मेरी प्यारी कच्चीना, बुली करने आ गए ना हम सही टाइम पे। ये बात अब बोल ले, लड़ना है अब मेरे से, लड़ तू। Traveler! Paimon! What are you doing here? We just came to have a chat, and then all of a sudden these guys were threatening you! Huh, you're not bullying Kachina on our watch! Thanks, you guys. I don't know your names, but if you really want to face me, I'll allow it. It has to wait until after the tournament, though. I need to focus on the upcoming matches. I don't want to let my parents down, or any of the friends who helped me get this far. That's enough, you two. Being caught off guard is not an excuse. You think you can cry foul play when you face the abyss? If this behavior persists, you may find yourselves barred from future competition. Whatever. Let's go. Are you alright? You're not hurt anywhere, are you? No, thanks to you. To be honest, I totally blanked out just now. I had no idea what to do. ऐसी छोटी चीजों पे दिमाग पे नहीं लगाते। आगे फाइट्स पे फोकस करो। बस जीवन में आगे बढ़ो। Just keep on moving. You can do it! I heard there was trouble. Has the situation been resolved? Yes. It was nothing out of the ordinary. A couple of sore losers coming to stir up trouble with the contestants. Some people are so obsessed with glory, they can't even bear the idea of failure. I hope you don't let him get to you, Kachina, because you'll need to get ready. Your match is up soon. Well, that came up quick. Alright, I'm coming. Well, guess I'm off. बेसिकली हम कच्चीना के थ्रू खेल रहे हैं ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो हम जीत जाएंगे। फिर तो मैं जिता दूंगा भाई। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आ जाओ पहली फाइट, बस आ जाओ। You must be Kachina. You know,
People told me I got lucky in the draw, but I beg to differ. There are no coincidences in the arena. If you're standing here, it means you're strong, no matter what anyone says. So, I'm looking forward to seeing what you're made of. The team stage ended before I had my fill of battle. I hope you don't disappoint. Well, anything you want to say in return? I won't lose to you. Not when so many people are supporting me and cheering for me. And I really want to earn a spot in the Night Warden Wars. All right, our contestants have each said their piece. To your places, everyone. And begin! तो भाई आजा भाई, तू तो अब आजा मार्केट में, आजा भाई मैदान में। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। हम खेल रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम ऐसे चीज़ें खेल रहे हैं, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो भाई आजा 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 आजा। हो गया बावड़ा हो गया, चल कोई बात नहीं, लास्ट मारी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आ जाओ भाई, लो हो जाओ बावड़ा, हो गए बावड़ा। ये ले भाई, डैमेज खा तू, इसका डैमेज खा भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम कंट्रोल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लो ये डैमेज, ये तो मर गया ले है भाई, इतने से नहीं ख़त्म। पहला राउंड तो जीत गया। I actually lost. Knew I had an eye for the good ones. Guess that means I was right about you all along. Congratulations to Kachina for taking the win. Let's give her a round of applause, everyone. Now, diving into the other matchups. That's one down! Woohoo! तो गाइस ये शायद हमारी सेमीफाइनल होगी। हाँ सेमीफाइनल होगी। देखता भाई कौन है भाई तू? लिलियो, पता नहीं कौन है। जो भी है भैया, लिलियन लिलियो क्या क्या कैसे नाम होते पता नहीं, मुझसे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होता, पर कोई बात नहीं गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये सेमीफाइनल का लग रहा है मेरे को, ये सेमीफाइनल वाला मैच है, बाकी सब कुछ पीट पाट दिया था हमने। पहली फाइट और सेमीफाइनल फाइट वाली तो दिखाते हैं, हर एनीमे में भी यही होता है भाई साहब। ले भाई ये अपना ये वर्ली टोली इसका अटैक पहले, अरे ये लो ये बात ये वाला अटैक बहुत मतलब बिल्कुल ही अच्छा डे। क्या कर रही भाई तू, क्या कर रही? अरे ले भाई, अरे कहाँ जाऊँ? बैठो इस पे बैठो। हाँ बैठो, चलो अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्या करें? समझ नहीं आ रहा। अब ये ऐसे ही ऊपर चढ़ी रहेगी तो हो गया। टर्बो 20 टू डिस्ट्रॉय क्रिस्टल पिलर्स। कहाँ से चढ़ूँ मैं? दिख नहीं रहा। यहाँ से चढ़ूँ? ना। अरे जम गए वो डैमेज यार। चलो। अच्छा दिख गया। अरे यहाँ से चढ़ो। गलत जगह चढ़ गए गाइस, गलत जगह चढ़ गए। रुको एक मिनट। टन। यहाँ से चढ़ना है ना, चढ़ो भाई। अरे भाई चढ़ो।
डालो डालो डालो। हाँ अब ठीक है, अब आ जाओ तुम, अब करूँगा। लो भाई, ये 1 2 3 4 एंड डाउन। ये गिर गई वो। चलो भाई, प्लंज अटैक। उधर भाग फिर से। अब तो भाई जीत गए, बहुत हो गया इसका तो। ज़्यादा नहीं, ये ले ये ले ये ले। कहाँ। ये लो भाई, अटैक करो। वन टू थ्री। जरा सी हेल्थ की जाने वाली। अरे कहाँ गई? और एक और ऐसा मैसिव अटैक बड़ा सा। क्या करूँ मैं इसमें? कहाँ चढ़ जाऊँ ऊपर? क्या करूँ? चढ़ जाते। ऊपर चढ़ना है ना, ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ के मारना है। देखे जरा, साइन तो नीचे बता रहा है, कहाँ पर वो? दिख नहीं रही। देखे भाई। तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मेरे को मिल नहीं रही थी, तो मैंने कट मार के फटाफट, मेरे को बाद में पता चला तो मेरे को इधर आना था। सॉरी गाइस, मैं सॉरी भी क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो वैसे भी कट मार दूँगा, मेरी हेल्थ भी वैसे बहुत डाउन है। पर एक बार और पड़ा तो मैं तो गया डायरेक्टली। 1 HP क्लच है भाई मेरा, ये 1 HP क्लच है गाइस। ये वाला मेरे को जाना था, इधर जाना था। ये जो कर्व है ना, यहाँ पे मारना था मेरे को। 1 2 और यहाँ पे 1 और ये 2 और ये 3 4 5 6, यहाँ मारना था मेरे को। यहाँ से हम जीत गए थे। ये मैच भी हम सेमीफाइनल भी जीत चुके थे गाइस। भाई आधे टाइम तो पता ही नहीं चला मेरे को करना क्या था। फिर उसके बाद दिमाग लगाया, फिर मैंने देखा कि कट लग रहा है, तो वहाँ जाके देखा, तो भाई सेमीफाइनल भी जीत चुके गाइस हम। Gotta hand it to you, kid. You really impressed me. I take back what I said before our match. You've got what it takes, Kachina. Youngsters like you, you'll forge your own miracles. And it's Kachina for the win! We'll now head into a short break as our contestants prepare for the final round of... Thanks for cheering me on, you two. You were great out there. You faced a lot of impressive competitors, but they never stood a chance. I don't think I did too shabby either. I've never gotten this many points before. You ready for the last round, Kachina? Mualani! I got permission to come, but What? बेसिकली गाइस, हम दोनों के बीच में लड़ाई, मुलानी और कचीना वर्सेस 1v1। देखते हैं भाई कैसा जाता है। I wanted to fight alongside you. I did too, but it is what it is. People with similar scores tend to get matched against each other, but we just have to get past it. War is cruel, and the Abyss certainly isn't going to go easy on us. Only Natlan's strongest deserve to stand against them. So, I'm going to give this battle my all, Kachina. To hand victory to your opponent is to take pity on them. But no one's asking for pity here, yeah? So, you ready? I'll do my best. Atta girl. So, if one of you has to lose, who should we cheer for then? You mean one of us is destined to win? It's something worth celebrating either way. I'll be happy no matter who wins. And I know you feel the same way, Kachina. So, don't overthink it. Let's just have ourselves a good match. Traveler, Paimon, I'll see you after the match. Kachina, I'll see you on the field. I've been training so long for this.
and Mualani's helped so much. I'm going to show her that it didn't go to waste. Thanks for believing in me. I'll try believing in myself this time too. गाइस ये हमारी फाइनल फाइट होगी। शायद फाइट भी ना होगी, मतलब दिखा देंगे, मतलब इसको साइड में कैसे लड़ूंगा फिर ऐसे। तो शायद ये लोग एनिमेट कर देंगे उस फाइट को, पर देखते कौन जीतता है उस एनिमेशन में। पर भाई ये हमारी फाइनल है, मतलब आज की वीडियो के लिए आखिरी की 10-15 मिनट की वीडियो और बनेगी ज़्यादा ज़्यादा, जब तक ये एक्ट ख़त्म नहीं होता उसके बाद देखते हैं। और ये एनिमेशन है भाई, लगा ही था भाई, क्या भाई गेंशिन क्या बनाया भाई, वाह भाई। और ये फाइनल भाई सेक्सी सीन था ये थोड़ा। और भाई ये बात एनिमेशन ये लगा ही था। और भाई बिल्डअप तो देखो भाई, बिल्डअप देखो भाई, क्या मस्त बनाया भाई। और भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते कौन जीतता है भाई। मैं इस एनिमेशन के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, पर जब तक वो कि घबराया सी लग रही है भाई, ये छोटी बच्ची है भाई एकदम भाई यार, क्या एकदम घबराई सी लग रही है। From the people of the Springs, a young prodigy and Night Warden Wars veteran, Mualani! This face-off between old friends promises to be an explosive showdown. May the best warrior win! You've come so far. Still nervous? Why does it have to be you? Still, I'm glad in a way. Even if I lose, I won't have any regrets. Come on! Kachina, this is no time to be modest. I know you want this more than me. And it's about time you start sounding like it, okay? I want to win. Mualani, this one's mine. Look. The winner is, from the Children of Echoes, Kachina! भाई मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। एनिमेशन भाई एक नंबर, टॉप नॉच एकदम, बिल्कुल ही हाइप क्रिएट कर रही थी जो हाइप पे है। गेंशिन का भी नेटलैंड पूरी हाइप बिल्कुल सही है भाई, मज़ा आ गया बिल्कुल ही। और ये फाइनली हमारी कचीना विनर हो गई है, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया भाई। एनिमेशन तो बहुत क्या फाइट अच्छी थी यार एनिमेशन में।
with her 6th consecutive win, Cheska of the Flower Feather Clan. She managed to turn the tides all by herself. Iansan of the Collective of Plenty. With an explosive comeback 10 years in the making, Kaiulani of the People of the Springs. A seasoned and renowned warrior, Kibungu of the Scions of the Canopy. Last but not least, finally living up to her true potential, Kachina of the Children of Echoes! Woo! Over here, Kachina! I made it. Feels like a dream. This is no dream. Your strength is what got you here. We'll be going to war together. It's an honor to fight alongside you, Kachina. No matter how many pilgrimages I witness, I'm always overwhelmed with pride in this moment. Pride for you, my brave warriors. You give me faith that our innumerable sacrifices are not in vain, that the future of Natlan shall burn with the brilliance of a blazing fire. Brave warriors, the following is an order, and also a personal request. Go forth and crush the abyss! Seize victory and glory for Natlan! As you command. As you command. Traveler, Paimon, there you are! I wanted to thank you for supporting Kachina back there. She really has grown into a formidable competitor. She deserved that win. Not that it feels good to lose, but I'm happy for her. It's definitely bittersweet, though. Hey, wanna go for a walk? Kachina and the others will be busy fighting the Abyss, so why don't I show you around Natlan for a while? Sure. What do you say, Traveler? Something on your mind? Listen, I'd be lying if I said I wasn't worried. But she's got experienced, powerful companions to take the lead. I'm sure they'll be fine. Glory always comes with a risk. If victory was assured, no one would take pride in it. She's not one to fall so easily. She bears the ancient name Uthabiti, after all. We just need to hold the fort while they're gone. Come to think of it, you've never visited my tribe, have you? Come on, I'll take you. The people of the Springs live alongside the Kaholasaurus. Our tribe is an ideal spot for some R&R. I'll take you to all the best spots. You'll love it. Looks like you beat me to it. Kinich? I was planning on inviting you to visit the Scions of the Canopy. Most of the adventurers that belong to the guild come from my tribe, so I figured you might be interested. Hey, first come, first served. You snooze, you lose, Kinich. Yeah, you were first. Still, Traveler, Paimon, feel free to stop by if you ever have time. You're all— Yeah, thanks for inviting us. All right, let's pack up and head out. तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो और मुझे उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आएगा। और वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा इसको आउटरो को। तो भाई हम धीरे धीरे करके सारे ये सब जाएंगे। अभी पहले मेरे को सारे टेलीपोर्टेशन ये करने हैं चिल्ड्रंस ऑफ एको के एरिया के, तो वो एक्टिवेट वो करके फिर उसके बाद मैं जाऊँगा स्प्रिंग्स में, या वो आएगा कल रात तक शायद वो वीडियो भी आ जाएगा, रात तक या तो परसों सुबह तक आ जाएगा। और रेपुटेशन खुल गया गाइस, हमारा रेपुटेशन सारे तीनों ट्राइब्स का जो बोला था वो भी है, अब वो भी खुल गया है, तो वो भी देखना पड़ेगा। और मैं इसको भी बढ़ाऊंगा, ये सारे कैरेक्टर को बढ़ाऊंगा भाई, ये जो भी है। अभी देखते हैं भाई कैसा जाता है।
पहले मैं कमीशंस के रिकॉर्ड उठा लूँ फिर उसके बाद देखेंगे सारे। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस, और मेरे को बताओ। और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा अभी मैं कौन से 5 स्टार कैरेक्टर उठाऊँ यहाँ से, तो देखेंगे यार, देखेंगे। तो भाई मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।